अदरवाइज कोर्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं टेररिज्म पे, नैब की, एंटी करप्शन की, स्पेशल कोर्ट्स की, जितनी है, द प्रिंसिपल इज विद डेथ द कॉर्पोरल पनिशमेंट, मॉनेटरी नहीं है सर, आर एग्जेक्टेड फ्रॉम द बॉडी. The body is no more, the appeal will abate, it will not continue. Continuance is a possibility if family steps in through Supreme Court rules, through a formal application, that too. आज सर फैमिली आ भी जाती तो law of the country does not permit the family, this is my speaking for myself, unless my lords would permit them, stigma ground पर फाइन नहीं है. अच्छा, जब फाइन नहीं है तो फैमिली आ भी जाए. नहीं, वो हम देखिए, हम दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं. हम उधर आज हमें ऐसा देखिए, एक बुनियादी असूल ये होता है कि मफरूजों के बेसिस पे आप फैसले ना करें. जी सर. तो कल किसी की राइट चली जाए और वो कहेंगे जी आपने तो अपने आप पे ये, तो एक्चुअल कोई आएगा लीगल एयर्स वो शायद ये पॉइंट रेज करे, तो हम इसको दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं. ये तो आपको वाज़ेह तौर पे कर दें. मगर मैं सिर्फ वजाहत के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, 561A में अगर हम दरवाजा खोलना चाहते तो वो ही लीगल अर्ज खोलते हैं, मगर हम 561A का सहारा लेकर के शायद खोल सकते या नहीं खोल सकते. ऐसी आपकी सिंस आप मौजूद हैं और माशाल्लाह काफी महारत है क्रिमिनल लॉ में, इसलिए हम आपका प्रेजेंस का फायदा उठा रहे हैं. प्योरली एकेडमिक. I must confess this was the most difficult brief that I have handled so far. High treason इससे पहले कभी ऐसा था नहीं. आप यहाँ से अंदाजा लगा लें सर. It came to me as a surprise. There were as many as 21 prosecutors appointed to bring home the guilt of the appellant, and I was the only one defending him, and that too जो मेरा एक गिला था. गिला? जी योर लॉर्डशिप था. ये तो फिर आपका तस्दीक कर रहे हैं कि I am equal to 21. Your lordship, even I was ousted from the proceedings. और वो then I had to go to the Islamabad High Court. चले वो छोड़ें, ये पॉइंट to my rescue. और मुझे वो सुनते बाद में, मगर ये पॉइंट बताइए. Your lordship, 561 आपने जी कहा कि मैं वो 10A पे खड़े होते हैं. नहीं, 10A पे खड़े होते, 561 पे खड़े होते, ऐसी लॉर्डशिप. ये तो हम अगर वो शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स एक नई विंडो खोलनी पड़ेगी, और उसके लिए if my lords are inclined, नहीं, we will that would only be if the legal aids had come कोई आए तो and they had challenged the violations. अगर कोई आता तो हम खोले ना. लॉर्डशिप अब वो कहना मुनासिब तो नहीं है, because I already appreciate the steps this honorable court has already taken. The legal heirs are not in the country. नहीं, वो हमें उनको पता चल गया. अच्छा, अब एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, you said you had very grave reservations about the Lahore High Court. What were the grave reservations about the Lahore High Court? Your lordship, you said I do not even appear in. Your lordship, I was assisting. My engagement was to the extent of. ऐसी पूछ रहा हूँ. सिटी में आपने बहुत ही बिल्कुल. उसके बाद वो तो लॉर्डशिप I am not before the honorable judge for many years, even in the Supreme Court of Pakistan. Why? So मैं पेश उनके पास नहीं. You want to disclose or not? I would not like to disclose. जनाब मुझे in chamber person तलब करना चाहेंगे, मैं explanation. नहीं, हम chamber में नहीं बुलाते किसी को. Shah Saab is aware, but for personal reasons, purely for personal reasons. Shah Saab is aware. Lordship, मेरी एक प्रिंसिपल पोजीशन भी थी, स्टैंड भी था, तो मैंने इन ऑल फेयरनेस मैंने उनको वो आर्ग्यू करना चाहते थे, वो किया. बट और इन द मीनवाइल मैं ये भी एक्सप्लोर कर रहा था कि फैमिली मुझे देयर हैज टू बी अ फ्रेश एंगेजमेंट. मैं ये भी कहना चाहूंगा, माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टर्मिनेट्स ऑन डेथ ऑफ द वकालतनामा खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वकालतनामा खत्म हो जाता है, क्योंकि कल आके वो कह सकते हैं आपको किसने इजाजत दी. किसने इजाजत ये
ये लोगों को बुलाएंगे। प्लीज सर, एक चीज बताइएगा related to this. You see, this was a case which was forced upon the federal government by this court, but they did not go back to 12th of October. Now, in the light of the amendments made in the Constitution, Article 270 AA, read with Article 12, is the door still open to proceed against those who collaborated in what had happened on 12th Lordship, had I been given the mandate to argue the appeal, my opening grounds would have been that this is a case where a constitutional crime has been investigated and prosecuted in an unconstitutional manner. For the reason, the obvious, the visible, the aiders, the abettors, the collaborators, those who were involved in the consultation process were dishonestly, there was a let-off. All the members, ये नेशनल असेंबली में ये सारी की सारी इंडोर्समेंट्स हुई इसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी, लॉ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट थी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के आप ऊपर देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व थे, इवन ऑनरेबल जजेस एज सेड बाय for myself, I have a different view. Were not been legalized, legitimized by this court, there would not have been 3rd of November. Of course, sir. But could 3rd of November have been directed, the federal government could have been directed to initiate from 3rd of November and leaving or ignoring 12th of October? Your Lordship, this was actually attempted right before the decision of the special court. The old prosecution team was notified, denotified, and a new one was notified who stepped in and filed an application that this complaint has not been filed correctly. And there should be certain amendments and changes in the number of accused and allegations as well. But that application was not entertained, and in a haphazard manner, without recording 342. नहीं तो खैर ये तो मफरूजों में जा रहे हैं मगर ये तो उससे तो कोई बात नहीं होगी कि कलेक्टिविटी विल abolish the individual act. वो है. It only points towards unfairness. हम जरा 5 मिनट के लिए उठते हैं और शायद फिर आज ही सुना दें उन सीपीज में भी, उधर तो आपको कुछ नहीं कहना है ना, और इसमें भी ठीक है. थैंक यू.